Hello students, welcome to STUDIFYSUCCESS. I am Utsav and this is third lecture of chapter 9 of class 9 mathematics, that is circles. So we will start with the theorem which we have done in last class. So we will revise the theorem first. Angles in the same segment of a circle are equal. Here we can say PAQ and PCQ are equal angles because they are in the same segment. So now we will proceed with the question based on that theorem. So given to us that ABC equals to 69 degree. So ABC, this angle is 69 degree and ACB equals to 31 degree, and we have to find BDC, this angle. So इस क्वेश्चन में हम ये थ्योरम को यूज करेंगे कि बोथ ऑफ द एंगल्स दैट इज BAC और BDC इक्वल होंगे क्योंकि दे लाई इन द सेम सेगमेंट. सो हमें पता है कि BAC BDC के इक्वल होगा बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो हम फर्स्टली इन ट्रायंगल BAC हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके BAC निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बाकी के दो रिमेनिंग एंगल्स गिवन है. So in triangle ABC, the sum of all interior angles will be 180 degree. So ABC plus BAC plus ACB equals to 180 degree. And BAC हमें given है, sorry ABC and ACB हमें given है. So BAC will be 180 degree minus 69 degree minus 31 degree. So BAC जो है वो BAC जो है वो 80 डिग्री आ गया एंड BAC इक्वल्स टू BDC. तो BDC जो है वो 80 डिग्री हो गया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और वी कैन से द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. सो हियर अगर इट लाइक इन दिस सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है दैट इज ABCD. अगर इसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम दैट इज एंगल A plus C equals to 180 degree and angle B plus D equals to 180 degree, then we can say कि ABCD is a cyclic quadrilateral. So अगर कोई quadrilateral है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है and the sum of pair of opposite angles of that quadrilateral is 180 degree, then we will say that ABCD is a cyclic quadrilateral. Also इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है कि अगर हमें ये गिवन है कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन वी कैन से कि इसके पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री है. So now we will move to the question based on cyclic quadrilateral. So here it is given to us that a chord of a circle is equal to the radius of the circle, and we have to find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc. So यहाँ पे हमें क्या given है कि this is a circle and इसमें जो chord है that is AB वो radius के equal है, that is OA और OB के equal है, and हमें ये angles find करने हैं जो कि chord we have to find the angle which is subtended by the chord at the point of major axis, major arc और minor arc. So हमें क्या find out करना है, that ACB and secondly we have to find ADB. This point is D. So we have to find the angles. So firstly we will start that chord is equal to the radius of the circle. So अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें AOB, तो हमें गिवन है कि chord AB इक्वल्स टू OA है और एंड OA इक्वल्स टू OB है. क्योंकि OA और OB तो रेडियस है तो ये इक्वल है आपस में, एंड दिस chord का की जो लेंथ है वो भी इस रेडियस के इक्वल है. सो इन ट्रायंगल OAB, OA equals to OB equals to AB. So this is a quadrilateral equilateral triangle now. So now अगर ये equilateral triangle है तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं. सो दिस इम्प्लाइज AOC इज so this implies that AOB is 60 degree. Now we know कि AOB की जो लेंथ होगी उसका हाफ होगा ACB because the angle subtended by a chord at
center is double of the angle subtended at the remaining part of the circle. So अगर ये ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री है तो ए सी बी जो है वो ए ओ बी का हाफ है. So ए सी बी जो हो गया वो हो गया हमारा 30 डिग्री. Now since ABCD is a cyclic quadrilateral, so ABB plus ACB equals to 180 degree. That is ABB and ACB is इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री है. और हमें क्या पता है कि दिस इज ABB जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं. हमें ये पता है ACB जो है वो 30 डिग्री है. सो ABB जो होगा 180 माइनस 30 डिग्री, ये 150 डिग्री हो जाएगा. सो एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the point of on the minor arc is and also at the point of major arc is 150 and 30 degree respectively. So here ये जो chord है AB वो मेजर एक्सिस पे जो एंगल बनाता है वो 150 डिग्री है और माइनर एक्सिस पे जो बनाता है वो 30 डिग्री है. Now we will move to the next question. Here PQR is 100 degree and P and PQR are the points on the circle with center O, and we have to find OPR, that is this angle. So since the angle which is subtended by the arc at the center is double the angle subtended by that arc at any point on the remaining part of the circle. So PQR अगर 100 डिग्री है, सो POR जो ये एंगल है POR का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो इस 100 का डबल दैट इज 200 हो जाएगा. सो रिफ्लेक्स ऑफ POR इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PQR. सो PQR की जो वैल्यू है 100 है, सो POR जो होगा 200 हो जाएगा. सो रिफ्लेक्स ऑफ POR जो है वो 200 आ गया. सो जो POR होगा वो क्या होगा 360 माइनस 200 दैट इज 160 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल POR हमें पता है POR जो है वो 160 डिग्री है and now we have to find OPR and ORQ. So in this triangle we can see कि OP जो है वो OR के equal होगा because they are radii of the same circle, right? So अगर OP जो है वो OR के equal है तो then their corresponding angles that is ORP and OPR will also be equal. So we can use triangle sum property, angle sum property in triangle OPR. So POR plus OPR plus ORP equals to 180 degree. So हमें पता है POR की वैल्यू है हमारी 160 डिग्री and these two angles OPR and ORQ जो है equal. So what we can write is 180 degree minus 160 degree. So इन दोनों का जो सम है OPR and OPR equals to 20 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट? OPR एंड ORP. सो हमने इनको इक्वल लिख दिया यहाँ पे, राइट? 2 टाइम्स ऑफ OPR इक्वल्स टू 20 डिग्री. सो OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ओनली. सो OPR की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 डिग्री हो जाएगी. So student, this is all about today's class. If you want to download the notes of this section, this lecture, you can find the link in the description box. Also, you can download the app STUDIFYSUCCESS where you can find the live classes and you can find test series, doubt solving problems. Like your doubt will be solved. So, if you want if you want to download our app, you can find the link in the description box and you can download our app and sign up. Then you can find the facilities like you can access the doubt solving and then test series and regular live classes. So this is all about today's class. Thank you.